अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग एक डिफरेंट वे में, एक डिफरेंट स्टाइल में एक अच्छा सा टेस्टी सा रेसिपी बना रहे हैं, मटन खीमा फ्राइड राइस। जी हाँ, उसी के लिए हम लोग वाटर भी गर्म कर रहे हैं और एक डिफरेंट और ईजीएस्ट वे में आपको आज हम लोग बता के दिखाएंगे। चलिए। राइस का प्रोसेस तो हो गया है। अब हम लोग मेन प्रोसेस, रेसिपी का जो मेन प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। उसके लिए बाउल में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही हम लोग फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इसमें ऐड करेंगे। ऑनियन स्लाइटली कलर चेंज होते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, होममेड जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह भुने के बाद हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे। कीमा ऐड करने से पहले ही थोड़े स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। पहले इसमें हम लोग टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसमें कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इन सारे स्पाइसेस ऐड करे बाद हम लोग इसमें मटन मिंस ऐड कर देंगे।
मटन कीमा प्रिपरेशन के बाद हम लोग जो फाइनल स्टेज है फ्राइड राइस का, उसका प्रोसेस देखेंगे। बाउल में हम लोग पहले ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही एज यूजुअल हम लोग जो फाइनली चॉप्ड गार्लिक और जिंजर है वो ऐड कर देंगे। जिंजर और गार्लिक के साथ साथ हम लोग इसमें स्लाइस्ड कैप्सिकम ऐड करेंगे। इमीडिएटली हम लोग इसमें फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिल्ली और कैरेट भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स स्लाइटली ऑयल में रोस्ट होते ही हम लोग इसमें साइमल्टेनियसली राइस और जो पहले ही पका हुआ कीमा ऐड करते हुए मिक्स करेंगे। इसी राइस में कीमे के साथ साथ हम लोग फाइनली चॉप्ड मिंट और कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, यकीन मानिए बहुत ही कलरफुल लग रहा है और उतना ही मज़ेदार भी रहेगा। आप भी अपने घर पे कोशिश करिए, उससे पहले इन बच्चों को पेट भर इस रेसिपी को खिलाएंगे।
आज हम लोग मटन कीमा के साथ दक्षिण के बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इन मासूम बच्चों के साथ। उनके बर्थडे के सिलसिले में नवाब्स किचन के टीम की तरफ से और हमारे तहे दिल से हमारे तरफ से भी हैप्पी बर्थडे दक्षिण, और दक्षिण के पेरेंट्स को क्षमा और बालकृष्णा जी को हम लोग हमारे तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।